Hello everyone, this is the ninth video of our JavaScripting series. In this video, we will learn about the JavaScript array. Very first, we will understand that what is array. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि array होता क्या है, why to use array and how we can use the array methods to use the to use any sort of in our programming language. तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि एक एरे होता क्या है. एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट. मतलब अगर मुझे कोई नंबर ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स अगर कलेक्ट करने हैं तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग एरे यूज करते हैं. देन अरे क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्पेशल वेरिएबल लेंगे जो जो वेरिएबल मीन्स द कैपेसिटी ऑफ दैट वेरिएबल इट कैन होल्ड द नंबर ऑफ वैल्यूज. ओके, तो चलिए इसको हम लोग एक प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे कोड कोड प्लेग्राउंड में हम लोग इसको मैंने यहाँ पे जेएस फिडल की से एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे. एरे क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले करना पड़ता है कि हम एक वेरिएबल लेंगे. ओके, नाउ द वेरिएबल कैन बी टेकन दैट विद द टू मेथड्स. मतलब एक एक तो या तो हम लोग लेट यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं. तो जनरली हमारा जो एरे है वो एरे हम लोग डिक्लेयर करते समय हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट से. कॉन्स्ट अगर मैं एरे का नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द नेम ऑफ एरे एज एन ARR. ओके, so this is my array and in this array I am going to take the numbers, collection of the numbers. For example, I am just going to take 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so see it is holding 5 values. Okay, this array is holding the 5 values. So the capacity of this array it is to hold हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, एक ही वेरिएबल लिया है हम लोगों ने ARR नाम का, और वो वेरिएबल हमारी 5 वैल्यूज को होल्ड कर रहा है. राइट, so for holding that these 5 values we are using only one method. Okay, अगर हम लोगों को इस लोगों को so whether it is holding the value. Okay, let me console this value. ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ. तो सबसे पहले हम लोग कंसोल करेंगे हमारे ARR को कि इसमें टू मैनिपुलेट दैट वेदर इट इज होल्डिंग द 5 वैल्यूज और नॉट. फाइन, तो हम लोग इसको रन करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रन करने के बाद हम लोगों को आउटपुट में कंसोल आउटपुट में हम लोगों को मिल रहा है 1 2 3 4 5. इट मीन्स दैट our array is holding the 5 values. Right, now we will be interested in learning the array. अगर मुझे कोई एक नया array create करना है. Okay, see now whenever we create a array then we can create the array by using the new technique, new keyword also. Okay, this is what is the significance of this new keyword. New keyword will create a array with the method of constructor. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक एरे यहाँ पे क्रिएट करते हैं. चलिए मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ जो मेरे नेम्स का एक कलेक्शन रहेगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन एरे कॉन्स्ट विद द कॉन्स्ट और न्यू ARR. मैं अभी नाम दे रहा हूँ न्यू ARR. ओके, so new ARR is equal to new in a array, new array. I will write over here the new array, and within a array I am going to collect a similar data type elements. अगर जैसे अगर मुझे for example names का array बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे names का collection करूँगा. That is Anand, or I am going to separate it with the certain number of the values, right, like this. Okay, तो मैंने एक नया वेरिएबल यहाँ पे बना लिया. राइट, ओके, सो आई विल टेक one more over here like this. Okay,
So this array, it is going to be this array. Every array must be, or every element must be separated with the comma. Okay. So let's check that whether this contain our values with the console.log. हम लोग इसको भी console.log से display करेंगे. ठीक है. So console.log and new array. So I'm going to take it as the new array, right? So new array, let me just clear this console and we'll run the program. Now you can observe that my previous array, it is having the values 1 2 3 4 5, and my new values are, it is nothing but the Anand, Raju and Praveen. Okay. So like this we can hold the create a new array also with the keyword of the new. Okay. Now let's go that what we are going to do. Okay. Now suppose I want to extract all these values. So to extract all these values we can use the indexing of the array. Okay, so let's learn about the indexing. Now let's learn about these methods. Okay, already we have just taken the constructor हम लोगों ने न्यू कीवर्ड से हम लोगों ने क्रिएट किया है. यहाँ पे हम लोग अभी इंडेक्स वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे. इंडेक्स वैल्यू के बाद हम लोग इनपुट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेंथ के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ेंगे. सो let's go to the indexing method, right? Okay. So suppose अगर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा. फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग द वेरिएबल लेट फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट. ओके, तो मैं यहाँ पे एक फर्स्ट एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ. ओके, एंड आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर द इंडेक्सिंग वैल्यू ऑफ द एरे, दैट इज अ न्यू एरे. जो हम लोगों ने न्यू ARR का जो भी क्रिएट किया है, तो हम लोग यहाँ से इसकी इंडेक्स वैल्यू को स्टार्ट करते हैं, राइट? सो रिमेंबर एरे इंडेक्स वैल्यूज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द जीरो. ओके, सो एरे की इंडेक्स वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट करती है. मैं इसको ये तीनों वेरिएबल को मैं एक तीन अलग अलग जगह पे कलेक्ट करता हूँ. ओके, so I will just change this variable. Instead of first I will write the second, then I will write the third, right? Now, and I want to take the index value of 1, I will take out the index value of 2 as well. Okay, तो हम लोग इसको, चलिए हम लोग इसको कंसोल करते हैं. So let's console these values. Console.log, I am going to console these values as let me just console the value of first element. Okay, so I have console this value. Let me console all the values, remaining all the values. So let me copy this and we'll paste it 3 times. And instead of first I will just take out the second, and I will take out the third over here, right? So this is going to be run. Okay, so मैं इसको क्लियर कर देता हूँ मेरे कंसोल को, और मैंने जो पहला एरे क्रिएट किया था उसको फिलहाल मैं कमेंट करके रख देता हूँ. ठीक है. So now you can see that here the very first I have created one array. मैंने सबसे पहले एक array क्रिएट किया. अभी अगर मैं उसकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो इंडेक्स वैल्यू हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से. सो जीरो वैल्यू इट इज नथिंग बट द अनंत. ओके, second value it is nothing but the Raju, and the third value it is nothing but the Praveen. Okay, so like that you can find out the index values of the array. Okay, now I want to tell you about one method, that is the length method. अगर हम लोग एक array की length को अगर find out करना चाहते हैं, so let's take that. I want to find out the length of an array. Okay, so I will just console.log and I will take out the length of this array. What I am going to take? I am going to take the length of new array. Okay, so new array
new ARR is my word, and I will take out it as an the dot length. लेंथ एक मेथड है जिससे हम लोग वेरिएबल या एक प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो लेट्स रन दिस। फाइन, so let me run this program. Now you can find out that we are having three elements in the array, and all these three, so that's why the length it is been showing it as an the 3. तो अगर मैं इसकी जगह पे और एक एलिमेंट अगर ऐड कर देता हूँ, चलिए मैं और एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट एडिंग वन एलिमेंट लाइक इन अ स्ट्रिंग ओनली। तो स्ट्रिंग में मैं एक कोई एक नया वैल्यू अगर हम लोग ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स टेक द वैल्यू एट एज एन स्वैप। ओके, सो like this. So you can now just you can check that I am just clearing the console, and I have added one more value. So this array length, it is going to be the 4. Okay, this time this array length is showing the as an 4. Okay, पहले तीन एलिमेंट हम लोगों ने कंसोल किए, फोर्थ एलिमेंट अगर मैं चाहूँ तो इसको फोर्थ एलिमेंट को भी कंसोल कर सकता हूँ इन दिस वे, राइट। So, so these are the methods of the about the, this is some method about the length, useful method about the length. Okay, now what let's check that what we have just learned. हम लोगों ने एक array create किया, उसकी length को हम लोगों ने classify किया, right? Okay, so let's use some methods now one by one. There are some important methods are there about the arrays. Okay, now suppose what I will just delete all these things. I hope this is a clear to all of you. Okay, I will delete the entire description, and I'm just clearing the console also. Okay, so now I want to use some methods to this array. Okay, so very first I'm going to use the method of toString method. Okay, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग toString method use करते हैं। Let's learn about the toString method very first. Okay, now what is the significance of the toString method? ToString method, it is going to convert any array into the string values. मतलब अगर मेरे कुछ वैल्यूज है, जो वैल्यूज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओके, आई एम हैविंग वन array with the number, and I want to convert that value into the string. Okay, so that values will be converted into the string. Okay, so let's watch this, that how I am going to convert the array. Okay, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक array create कर लेता हूँ। ओके, और ऑलरेडी मैंने एक array create किया है, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल it will be converted into a single string only, right? Okay, so I will take one variable with the let str is a one string. Okay, str is a one string, and I want to convert this arr, that is arr is my array, and array into the string method. Okay, so I will use over here the method called as an toString method. Okay. Remember, always these methods are going to be used as an a function. Okay, तो हम लोग एक फंक्शन यूज करने वाले हैं। ओके, तो एरे को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर हम लोग इसको कंसोल करते हैं, लेट्स कंसोल दिस एज एन। ओके, so let me console both the values, console.log. I will console the value of ARR also. ओके, मैं ARR की वैल्यू को भी कंसोल करना चाहूँगा यहाँ पे, और हम लोग दूसरी वैल्यू को भी कंसोल करते हैं। console.log, I will just console this value with the of str also. Okay, so let's observe what will happen. Fine. तो अगर हम लोग इसको run करते हैं, so now you can show that these values, this upper value, it is nothing but the number. It is a number, and it is been converted into the string. These values are in these elements, it is been converted into the
string values. Okay, so that is the significance of the toString method. ये toString method का significance है. Fine. Now what I want to do, I want to do one thing, that is the I instead of toString method I am going to use it as an the join method. Okay, हम लोग सब यहाँ पे अभी join method use करते हैं. What is the significance of the join method? Join method, it will join all the array elements into the one string. Okay, वो सारे elements को हम एक string में क्या करेंगे, convert करेंगे. Okay, so I would like to show you the output of both so that you will not be confused for the remaining one. Okay, मैं इसके पहले के भी जो method है उसको मैं as it is रखता हूँ. Okay, eventually I just erase that. Okay, and I am just going to take it as an the string str1 and this is our str2. Okay, and we will console both str1 also, and I will just copy this and will show you the str2 also, right? So this value, let us watch the output now. Now you can observe that these values are nothing but the number. मतलब एक मेन array है जो हम लोगों ने ARR की values को 1 2 3 4 5, this is nothing but a number, and these numbers it is been uh, converted into the string with the help of toString method. Okay, and these elements has been joined into the one string only uh, with the help of join method. Okay, तो join method से हम लोगों ने एक array में हम लोगों ने एक particular element को क्या किया, पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोगों ने यूज किया, राइट. ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अनदर मेथड विद द let's watch about some methods now. Okay, that suppose I want to use this method as an the mm, let's learn about the one important method, that is the concat method. Okay, so let me check out that whether I have just missed any method or not. Okay, तो सबसे पहले हम लोग एक concat method के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so concat method, concat, it is used, the term it is been used to join the two values. Okay, means two values means what? If any one value is a string and another value is any type of another string or any number, then these two values will be joined together with the help of concat method, right? Okay, so for example, I am just going to create I am already having the two strings right now. Okay, मेरे पास दो स्ट्रिंग ऑलरेडी है. ओके, तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे और एक एरे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ const, right? Const, and I am just going to create one array that is the new ARR. Okay, हम लोग एक नया वेरिएबल लेते हैं new ARR, and I will create here the one array with the two elements. Okay, हम लोग यहाँ पे दो elements देंगे, right? For example, I am just using the elements like a guard. Okay, and I will just use one more CHA, or I will use one more string, that is CHA, right? Okay, so these are the two arrays I am now here with. Okay, I will just let out these two and will use the method of the concat. Okay, so if I want to create the one variable, so let me take one variable. Let I want to create one array with the with the new variable. Okay, new array. Okay, and this will be result into ARR will be joined
that is will be concat, not to join, will be concat with the variable. Within this we will pass some value. Okay, so concat with the new arr will be concat with the, that is, new arr. Okay, so that is my syntax. Fine. And here what I want to do, I want to console the all the values, that is the value of arr, then the value of NWE. By mistaken I have just created a variable with the NWE, and I will create a one variable with the another, that is a new ARR. Okay, so let me just save this. I will clear the console very first, and if I will run this, you can observe that my first array, it is nothing but the numbers, that is 1 2 3 4 5. Then and the second variable, it is the value, two string values I have been used in a second array, and the last one, it is been I have used concat the both the things, that is I have just concatenated the 1 2 3 4 5 with the GURD and CH, so created one new array. Okay, so this is about the concat method. Let's check about the another method now. Okay, now suppose I want to find a particular element. Okay, that is let's say that we are already having the array of number, and I want to find the result of the any number. Okay, so let's see that how we can find it out. Okay, that now I will just कमेंट दिस आउट. ओके, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं. ओके, for example, let me take one variable like a result. Okay, so I will take one variable, that is let result is equal to and what I want to do, I want to use the arr dot find. What this is going to be find out, ये क्या find out करने वाला है. So suppose all the values, it is going to find out all the values of the variable, the values it is going to be less than 5. Okay, so let's take that if I'm having one variable x, and x will be the values, it will this will return the value with the x and y. Okay, so or let me take that x is less than 3. Okay, तो ये क्या करेगा, ये उन सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगा जितनी वैल्यूज की x लेस देन 3 है. ओके, so I will take the here console.log and res. Okay, so my variable it is nothing but the res. Okay, let me rub this out. इसको निकाल देता हूँ. ठीक है, कंसोल करते हैं स्टेटमेंट को. लेट्स फाइंड आउट द रिजल्ट. ओके, एंड हियर the result, it is being given that the very first element after the x less than for 3, it is nothing but the 4 only. Okay, so it is giving the result, that is immediately after the 3, the immediate value, it is nothing but the 4. Okay, so this function, whatever this function I have used over here, this is called as an callback function. Okay, callback, what is the role of, we will learn that what is the role of callback function. callback function क्या करता है, callback function हमेशा वो जब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जितनी वैल्यूज ट्रू है उन सारी वैल्यूज को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा. आफ्टर द मीन्स दिस इज गोइंग टू बी शॉर्टर योर सिंटैक्स with the function which will return the any value. Okay, so that we call it as the callback function. कॉलबैक फंक्शन एक हमेशा एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है जो हर एक एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसी वैल्यू को हम लोग एक रिटर्न करेंगे. तो ये दो काम एक साथ कर सकता है, एक कॉलबैक कर सकता है, दूसरी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है. ठीक है, so that is a result. Okay, so in this example also it is been mentioned that suppose I want to find out the value
which is immediately greater than 20. Okay, so it has returned the value of 22. So very first element it has written. Okay, उसने क्या किया, उसने सबसे पहला एलिमेंट रिटर्न किया। कंडीशन ट्रू होने के बाद सबसे पहला एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न किया है। ओके, in our example also, after the condition get true, okay, x is less than 3, तो इस जगह पे सबसे 3 के बाद इमीडिएटली जो वैल्यू है 4, वो वैल्यू ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे रिजल्ट आया 4। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू विल बी रिटर्न विद द फाइंड मेथड। देन you can use such find out, in this way you can use some find out method also। आप इस सेम वे से find index मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके, चलिए हम लोग एक एक थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि फाइंड इंडेक्स मेथड का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, मैं इसकी जगह पे, मैं फाइंड की जगह पे यहाँ पे यूज करता हूँ फाइंड इंडेक्स मेथड। आई विल यूज द फाइंड इंडेक्स मेथड। ओके, एंड let me just clear out this console। Previous output was the 1 2 3 4 5, and our output was the 4। Let's check what is the output of this one। Okay, now it is been given that it will find out the index after immediately it is returning 3। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये 3 रिटर्न कर रहा है। 3 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी इंडेक्स पोजीशन वो है 3। ओके, मीन्स आई हैव टोल्ड यू दैट द एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो अगर हम लोग इसको 0 से स्टार्ट करते तो 0 1 2 and this is at the third position। So immediately after this condition becomes true, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारी इंडेक्स पोजीशन उस टाइम पे कौन सी है, 3 है। ओके, सो वेरी फर्स्ट आई हैव गॉट द third result like this। Okay, so this one I have already shared। Now let's learn about the one important method called as the for each method। Okay, हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, जहाँ पे हम लोग फॉर ईच मेथड से सारे एलिमेंट्स को इटरेट कर सकते हैं। ओके, so let's create one function by which we can iterate all the values। ओके, हम ये एक मेथड है जिससे हम लोग सारे एलिमेंट्स को iterate कर सकते हैं। for with the help of for each method we can iterate all the values। ओके, within that function। ओके, तो अगर मैं इसको अगर सिंपली अगर if I will just demonstrate this one with the for each method। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, हमारे पास कॉन्स्ट एक वैल्यू है। ओके, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉर ईच मेथड। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि arr डॉट फॉर ईच, यहाँ पे फॉर ईच यूज किया। फॉर ईच में हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जिसका नाम हम लोग देंगे fetch। ओके, और मैं इस फंक्शन से इसको कंसोल करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड आई विल टेक द वैल्यू ऑफ fetch। ओके, मैं fetch की वैल्यू को रिटर्न करूँगा कि ये कहाँ पे एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड इंस्टेड ऑफ। ओके, फाइन। तो हमारी ब्रैकेट्स, लेट्स चेक द ब्रैकेट कि हमारी ब्रैकेट प्रॉपरली क्लोज हुई है कि नहीं हुई है। एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने, फंक्शन में हम लोगों ने एक, ओके फाइन। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोगों को फेच के बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्सपेक्टेड है, तो ये चीज़ हम लोग कंसोल करेंगे ब्रैकेट में। इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग इसको रब कर देते हैं। नाउ इट इज, आई थिंक इट इज करेक्ट। ओके, चलिए ये हमारा स्टेटमेंट कंसोल हो गया। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। फाइन, राइट, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। जब मैं इसको रन करता हूँ,
बोल रहा है syntax is missing. Okay, fine. Let's check that whether I have left some of sort of thing. फेच फंक्शन क्लियर किया हम लोगों ने। फेच फंक्शन क्लियर करने के बाद ओके एक एक ब्रैकेट हम लोगों ने मिस कर दिए है यहाँ पे। तो मैं इस ब्रैकेट को कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद सेमीकोलन देता हूँ। ओके, आई थिंक इट इज बिन क्लियर नाउ। ओके, तो चलिए ये देखिए फॉर ईच मेथड क्या कर रहा है। फॉर ईच मेथड हम वो क्या करके इसमें क्लियर कंसोल कर देता हूँ। मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास 5 एलिमेंट है। सारे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये फॉर ईच मेथड। ओके, तो 1 2 3 4 5 visiting every element, it is been taken as in the for each method. With the help of for each method we can do that, right? Okay, so this is the demonstration with the for each method, right? ऑलरेडी हम लोगों ने इंडेक्स ऑफ मेथड को ऑलरेडी लर्न किया है इसके पहले। और एक मेथड हम लोग यूज करते हैं दैट लेट्स लर्न अबाउट द सॉर्ट मेथड। ओके, सॉर्ट मेथड क्या करेगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक सॉर्ट करके दिखाता हूँ। ओके, आई सपोज फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द रैंडम एलिमेंट्स। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रैंडम एलिमेंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 15 20 15 12 फाइन। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 3 14 5 like this. Okay, now I will clear here all these things. I will just clear, I would have to clear all these things and now I will create one variable. मैं एक variable लिखता हूँ। Okay, sorted array. I will create one array with the const sorted array, sorted arr. Okay, and I will use here the sort method. See how I am going to use it. arr dot sort. Okay, हम लोग सॉर्ट करने वाले हैं। किसको सॉर्ट करने वाले हैं? arr को सॉर्ट करने वाले हैं, राइट? And after sorting this, I am going to console the result. Okay, let me console the both the things. मैं दोनों चीज़ों को कंसोल करना चाहूँगा। हम लोग arr को भी कंसोल करते हैं और मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को कॉपी करके हम लोग कंसोल करेंगे with the sorted arr also. So sorted arr. I will console this sorted arr, right? Okay, so let me clear this console. And if I will run this program, you can observe that the values, it is nothing but the 12 14 15 3 5. Okay, but it is been in a same manner it is been come. Okay, so this method is not going to work for the स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, ये वैल्यू ये नंबर वैल्यूज के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द नंबर वैल्यूज। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई विल टेक द एनी स्ट्रिंग वैल्यूज, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कोई एक स्ट्रिंग वैल्यूज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द HTML. ओके, देन CSS, I will take the value of CSS. Okay, then I will going to take the value of JavaScript. Or I will take one more React.js. And I will try to add one more also. Okay, that is a Angular. Okay, so if I will just clear this one, okay, and will run the result. Now you can find out that this array, it is been sorted. It is been sorted in order of AngularJS, CSS, HTML, then JavaScript and React.js. Okay, so this what is the purpose of this method? It is the array will be always considered as a sorted one, and it will be sorted according to the alphabetical manner. In this fashion you can sort the alphabetical manner. Okay,
This is very important method. I have already I have explained to you. Now here are some assignment questions have been given. यहाँ पे कुछ assignment question given है जो आप लोग इसमें से go through कर सकते हो. You can just practice this question and can find out the result as well. Okay, so this is all about the array methods. In our next lecture some sort of another methods we will learn about some other string methods as well. Okay, so till then just stay tuned and stay in a studying mode. Okay, thanks for watching the video.